Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn different names for money. In marriage, शादी में money is called dowry. Dowry meaning जहेज. In school, money is called fees. Fees. To kidnapper, money is called ransom. Ransom meaning tawan. To children, money is called allowance. Allowance meaning जेब खर्च. And the last one is to divorce, money is called alimony. Alimony meaning नान नफका. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा. And the next part is about present versus past verb form. Let's get started. Present and past verb form. I have, मेरे पास है. I had. Past, मेरे पास था. I am, मैं हूँ. Past, I was, मैं था. I do, मैं करता हूँ. Present, past, I did, मैंने किया. I go, मैं जाता हूँ. Present, I went, मैं गया. I see, मैंने देखा है. Past form, I saw, मैंने देखा. I take, मैं लेता हूँ. I took, मैंने लिया. I feel, मैं महसूस करता हूँ. I felt, मैंने महसूस किया. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा.